So what I want to do is I want to create a new list with the square roots of all the numbers. Okay, so what I want to create a new list where that list should contain the square roots of each and every number. Okay, so how will I go about this program? Okay, so there are multiple ways of doing this. Okay, right now I can think of three different ways. Okay, so the first way, now obviously whenever I say square root, it is understood that there is no square root function in Python. So you have to include that math library. If you remember last time we have seen. So to include math library, we will use import math. Okay. And once we do that, then now we have all the math related functions, like we can do sine, cos, log, power, permutation, combination, and even square root. Okay. So to do square root, the function is dot sqrt. Okay, so this is the function, and here if I put, let's say 16, that should give me, okay, so if I run this, you can see it gives me 4.0. Okay, perfect. So this is how you can get the square root, but this is not what I want. Okay, what I want is I want to create a new list with all these elements, square rooted elements of these. Okay, so let's see how to do it. So let's say method one. Okay, so method one, first option that we will see using for loop. Okay, so for, let's say x in a, right? तो ये एक स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि a अगर लिस्ट है तो उसके एक एक एलिमेंट्स x में आके स्टोर होंगे. ओके, so now what you have to do is you have to just do x, sorry, math dot sqrt of x. Okay, that will give you the result, बट इसको स्टोर करना है कहीं पे तो, राइट? सो स्टोर करने के लिए लेट्स डिफाइन b फर्स्ट. ओके, b डिफाइन किया empty, and now if you remember we have a function called b dot append. ओके, सो append से वो एंड में ऐड हो जाता है. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, पहले मैंने b खाली कर दिया, मतलब empty b ले लिया, उसके अंदर फिर जो भी एक एक वैल्यूज आ रहे हैं वो मैं b के अंदर डालते जा रहा हूँ. ओके, so that is how this will work. Now if I run this, you can see I get 4.0, 2.0, 3.0, 8.0, 5.0, and 7.0. Perfect. Okay, so that is the square roots of all these three things. Okay, so this is method one. Let's move on to method method two. Okay, okay, so method two is slightly you know, different. So in method two, we have already used this method many times, but I will show you, once we learn this one, you will understand the power of that method. Okay, so we have been already using this method, but not for this purpose. Okay, so let me show you. So whenever you have a list and you want to do the same operation on every list, okay, so this statement is very important. Okay, so whenever you have a list or a tuple, anything, and you want to do the same operation on every element, then the best way to handle it would be using something called as map function. Okay, so you must have heard of map function. Okay, इनपुट के टाइम हम लोगों ने किया था, याद रहेगा आपको. इनपुट जब हम लोग को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद इंट करना रहता है, तो हम लोगों ने मैप के अंदर से पास किया था, राइट? So the same thing I can use over here. So let me show you. So b is equal to, so I'm going to do map. Okay, so map, now map requires a function to operate on. Okay, so normally हम लोग यहाँ पे int देते थे, right? So यहाँ पे हम लोग
int फंक्शन देते थे और यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर वाज दी लिस्ट। ओके, सो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को अभी int थोड़ी चाहिए। ओके, सो इधर हम लोग को कोई और फंक्शन चाहिए। ओके, सो राइट नाउ वी हैव टू मेक स्क्वायर, सॉरी यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, राइट। सो वो स्क्वायर रूट का फंक्शन है क्या? सो जो भी हम लोग फंक्शन देंगे उसका एक ही रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी फंक्शन यहाँ पे देंगे उसका एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि टेक इट शुड एक्सेप्ट ओनली वन पैरामीटर। ओके, so that is the requirement. So if you look at this math dot square root function, how many parameters it is accepting? Only one. Okay, so in that way, so that means I can directly copy this, and instead of int I can paste this. Okay, and one thing to remember, in math function you never put the round brackets. Okay, brackets की जरूरत नहीं है. Okay, so this is how you can do it. Okay, so ये हो गया, राइट। अभी ये जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एक मैप ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट वो नहीं चाहिए अपने को, लिस्ट चाहिए करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको लिस्ट बना दिया। ओके, एंड नाउ आई विल प्रिंट इट। सो लेट्स प्रिंट बी and let's see what do we get. If I run this, you can see I get the same exact output. Okay, so ये output method 1 का है और ये output method 2 का है. Okay, so exact same output. Okay, so you should remember when to use map function. Okay, so whenever you want to do same operation on all the elements of a list or a tuple, then you can use math function. Okay, so that is how this works. Now the second thing, it is not necessary that you have to use an inbuilt function. Okay, so यहाँ पे हम लोग ने inbuilt function use किया है. Okay, last time int use किया था, यहाँ पे math dot square root use किया है. जरूरी नहीं है, you can create your own function also. Okay, so let's create our own function. Def, let's say square. Okay, square of a and return a into a. Okay, so I've created my own function, and now instead of this math dot square, oh sorry, I have to do math dot square root of a. Okay, so I've created my own function, और अब मैं instead of this I can put square. Okay, without the brackets. Okay, so this is how it works. If I run this, you can see I get the exact same output. Okay, so this is the beauty of this. मतलब अगर समझो इनबिल्ट कोई फंक्शन नहीं है जो आप यूज कर सकते हो, तो आप अपना खुद का भी फंक्शन यूज करके मैप को दे सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज मेथड नंबर 2. Okay, now here itself you can do lambda function also. So that is the another use of lambda function. Okay, so अभी यहाँ पे समझो मुझे स्क्वायर रूट के साथ साथ multiplication by plus a. Okay, so this was the formula. Okay, so अगर ये फॉर्मूला ये है तो ये तो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता, राइट मतलब डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, तो मुझे फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज ये फॉर्मूला वाला कोई फंक्शन है ही नहीं. ओके, so this formula is not directly there inside Python. We have to manually write it. Okay, so in that case a function has to be defined. Okay, so that is understood. But ये तो उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है, अभी हमारा फंक्शन रेडी है. But if we want, we could have, instead of defining a function, we could have used a anonymous function. Okay, so now before doing that we have to decide or understand, can it be possible to make a anonymous function? Okay, so क्या मैं इस चीज का anonymous function बना सकता हूँ? Can anybody tell me? Yes sir. Why? Sir, एक ही स्टेटमेंट करके. Yes, that is very true. So this is the most important line that you should understand. अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है, so let's see how to make it. And the best part is, so the lambda function
you can directly call. Okay, so that is the reason why lambda functions are popular. Okay, so ऐसे cases में जैसे कि for example map के अंदर यहाँ पे आपको lambda function सॉरी normal function रहता तो पहले कहीं तो जाके define करो और फिर यहाँ पे यूज करो, ऐसा करना पड़ता है ना. बट अगर लैम्डा फंक्शन रहेगा तो देखो कितना इजी पड़ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू डिफाइन एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली राइट लैम्डा ओवर हियर, गिव द पैरामीटर a or x, anything whatever you want. I don't want to ठीक है. अच्छा, और एक चीज लास्ट टाइम उन्होंने स्कोप भी देखा था. सो दिस a is different from this a. Okay, so you should remember that. Okay, usually मैं ऐसा मिस्टेक करता नहीं हूँ. This creates a little confusion even though they are different. Okay, so ये a और ये a अलग है. इधर आप कुछ भी करोगे वो इसको अफेक्ट नहीं करने वाला, because if you remember I have taught you about global scope and local scope. So ये जो a है वो local पे है, right? So it does not matter. But ये जो a है वो global पे है. Okay, so ये दोनों अलग अलग है. ठीक है, सो इसलिए मैंने सेम नाम लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ पे आप सेम नाम मत लो लैम्डा फंक्शन के टाइप. ओके, सो यू यूज समथिंग डिफरेंट. ओके, सो मैंने x ले लिया. ठीक है, x लेने के बाद यहाँ पे आई हैव टू मेंशन द ऑपरेशन. सो व्हाट इज द ऑपरेशन? आई विल कॉपी दिस, paste it over here, and instead of a I will put everywhere x. Okay, so because the input is x, so अंदर एक्सप्रेशन में भी x से ही आना चाहिए सब कुछ. ओके, एंड दैट्स इट. सो दिस इज माय लैम्डा फंक्शन, राइट? सो नाउ यू कैन सी, नाउ आई डोंट नीड दिस, राइट? सो लैम्डा फंक्शंस का एडवांटेज ये है कि यू कैन राइट कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स विदाउट इवन डिफाइनिंग एनी फंक्शन. ओके, मतलब अलग से फंक्शन डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो. ओके, बट ओनली ड्रॉबैक हियर इज दिस कैन बी यूज्ड ओनली वंस. ओके, सो व्हेनेवर यू राइट लैम्डा फंक्शन इट इज नॉट फॉर रीयूजेबिलिटी. ओके, बिकॉज लैम्डा फंक्शन रीयूज नहीं हो सकता अनलेस यू सेव इट इन अ वेरिएबल. ओके, बट फंक्शंस का मेन एम आपको पता है. फंक्शन सब लोग मेनली क्यों बनाते हैं? टू reuse it. Okay, but lambda function because उसको नाम ही नहीं होता है, so उसको reuse कर नहीं सकते. Okay, unless you save it inside a variable. Okay, so that's it. Let's run this and you can see I get the output. Okay, so ये अलग output आ रहा है because मैंने x भी add किया है. Okay, so let's remove that and run it and I get the exact same output. Okay, okay. So now let us look at the last method. Okay, so this also we have covered earlier. So I'm just showing you 3 different ways of doing the same thing. Okay, so अगर आपको ये करना है, ऐसा टाइप का कुछ भी चीज करना है, मैं just एक example ले रहा हूँ. So ये करना है तो what all methods are there? Okay, so let's first print b. Okay, and then let's use, okay, so the next method is using list comprehension. So it is very easy concept, and once you understand it you will love to use it everywhere. Okay, so let me show you what is list comprehension. Okay, now you have seen this, right? So for से हम लोग ने कैसे किया, नया लिस्ट बनाया, right? So Python में there is a shortcut to this. Okay, so you can do a shortcut for this method. Okay, not this method, this first method. First method का एक shortcut है, and that shortcut is called list comprehension. Okay, so let me show you. So the way it works is you first start with a list. Okay, so empty list. So b is equal to empty list. Okay, and inside that you put a space and type for, let's say, any variable, let's say x in a. Okay, ये मैंने लिख दिया. ओके, सो ये वाला मेथड याद रखो. सो मैंने ये वाला पार्ट इधर से उठा के इधर डाल दिया, राइट?
and all you have to do to make this a list comprehension is, मैंने जो पहले स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ा था ना, वहां पे आपको जो भी एक्सप्रेशन चाहिए वो लिखो, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन चाहिए, राइट, मतलब जो भी आपको चेंजेस करने हैं वैल्यूज के साथ वो यहाँ पे लिखना है, ओके। सो अपने को चेंजेस क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। सो आई विल राइट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ओके। So this should be the variable that is coming over here. Okay, so मतलब इधर आपने जो भी नाम दिया है, let's suppose if I give here D, so यहाँ पे भी D आना चाहिए, okay, that is one thing you have to understand, okay, that's it. This is list comprehension. If I run this, I get the exact same output, okay. So this is method 1, method 2, method 3, all of them gives me perfect result, but this is my favorite, list comprehension, okay. So it is obviously because it does everything in single line. Map also does it, okay, so map also does it in single line, but this is, little bit confusing. Why? Because first of all there is a lambda function, inside that there is a map function, inside that, sorry, outside that there is a list function, okay. So so much is required to do such a simple thing, right? Whereas in list comprehension, simple है, कितना मतलब easy है, right? So basically I will just do it one more time so that you can understand. List comprehension is very important. So if I to do that, you just have to put a square bracket, put a space, okay, and write the for loop as normal, okay. So normally जैसे for loop लिखते हैं वैसे लिखो. So for, let's say, y in a, okay. So this a is this a, okay. So the original list, okay. So अभी इसमें से क्या हो रहा है, so for y in a से normal for loop इधर रन हो रहा है, ठीक है। So हर एक आइट्रेशन में y के अंदर पहला एक एक वैल्यू आएगा। सो पहले आइट्रेशन में x 16 आएगा, सेकेंड आइट्रेशन में 4 आएगा, ऐसा, ठीक है। एंड हियर जो उन्होंने स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ा था वहां पे आपको कोई भी ऑपरेशन चाहिए वो कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल y इंटू वाई, मुझे स्क्वायर निकालना है हर एक नंबर का, तो मैंने y इंटू वाई कर दिया, ओके। सो इफ आई रन दिस यू कैन सी आई गेट स्क्वायर्स ऑफ all the numbers, okay. So you can do any operation over here, any complex operation will do, okay. But I want to do math dot square root of y, okay, and let's run it. That's it, okay. So that is my 3 methods of doing the same thing. So see, append क्या करता है, so let's suppose I have an empty array, okay. So sorry, empty list, right? So if I right now print it, you can see I get empty, right? So if I do b dot append and let's say 5, okay, so let's see what happens, okay. So I get one element inside this. Let me copy this, paste it, and let's append 3, okay. Can you see what is happening? So basically every time I run append, it is actually adding elements. ऐसा समझो कि हम लोग पुश कर रहे हैं एक एक करके बी के अंदर चीजें डाल रहे, ओके। सो append is like putting some values inside b, okay, no putting और कहीं भी नहीं, end में, okay. So it's like a queue. So the next thing that we are going to see is recursive functions, okay. So basically when a function calls itself, that is called as a recursive function, okay. So normally हम लोग फंक्शन को फंक्शन के अंदर से कॉल नहीं करते, बट रिकर्सिव फंक्शन में सेम फंक्शन को उसके अंदर से कॉल करते, मतलब अंदर ही नेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो नाउ हाउ टू यूज दिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So basically whenever we write a recursive function, basically we are replacing a for loop. So whenever there is a for loop with a range, okay, so मतलब counter based for loop है, तो आप उसको
रिप्लेस कर सकते हो रिकर्सिव फंक्शन से. ओके, दैट इज द वे यू कैन डू इट. Okay, so let me show you one example. So let's say I want to do factorial. Okay, so let's say a is equal to 5 and I want to find factorial of this. Okay, so how will I find factorial of this number? Using, because we have already done this in one of the tasks. So what we do is we define a variable called product and initialize it with 1. Okay, and then we do for let's say I in range. Okay, and range we will start from 1 to whatever is a. So a अगर 5 है तो a plus 1. Okay, why a plus 1? Because range में अगर मैं a तक करूंगा तो वो एक्चुअली a से एक कम रेंज वर्क करता है, इफ यू रिमेंबर, राइट. सो अगर मैंने रेंज ऑफ 1 to 5 किया तो वो एक्चुअली 1 to 4 करता है काम, राइट. सो दैट्स व्हाई 1 to 4 किया तो मुझे फैक्टोरियल का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, राइट. सो मुझे 1 to 5 ही चाहिए, राइट. सो दैट मीन्स एक प्लस करके मैंने किया तो वो a तक करेगा काम. ओके, सो ये मेरा हो गया. अब लेट मी जस्ट सिंपली प्रिंट आई. So this is a very good habit to check if your for loop is proper. Okay, so before you write the actual logic, you should always do a print and check if your for loop is working perfectly. So if I run, I get 1 2 3 4 5 perfect. Okay, अगर आप इसको 0 से चालू करते तो क्या होता? 0 1 2 3 4 5. ठीक है, ऐसा आता. बट ये चलेगा क्या फॉर फैक्टोरियल? नहीं सर, आंसर 0 हो जाएगा. हाँ, आंसर 0 हो जाएगा. So that's why the first element that we start with also should be 1. Okay, now once that is done, the formula is very simple. So product is equal to product into I. Okay, सो एक एक करके आई के जो भी वैल्यूज है वो प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. इनिशियली प्रोडक्ट 1 है, सो पहला इटरेशन क्या रहेगा? 1 इंटू 1. 1 इंटू 1 1, तो 1 यहाँ पे स्टोर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में i2 हो जाएगा. सो प्रोडक्ट 1 है, i2 है, तो 2 इंटू 1 2. सो प्रोडक्ट में 2 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, सो सिमिलरली एवरीथिंग विल work. Okay, so once all this thing is done and finally I will come out of the loop. Okay, so अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो लूप के अंदर ही रहूंगा, बट मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो लूप के बाहर आ गया, राइट. नाउ आई कैन सिंपली प्रिंट prod and that will give me my factorial. Okay, so if I run this I get 120. perfect. 5 का factorial 120 होता है, right. so ये हो गया मेरा normal program. Okay, so now we are going to convert this into a recursive function. Okay, so let's see how to do that. Okay, so I'm going to comment this out. Okay, and first of all I will define a function. So let's define factorial of x. Okay, ये मैंने फैक्टोरियल ऑफ x डिफाइन कर दिया. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा? आई विल रिटर्न x इनटू फैक्टोरियल. मतलब ये इसके वजह से ये एक रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है. ठीक है, किसके वजह से? आई एम कॉलिंग इनसाइड फैक्टोरियल, आई एम कॉलिंग फैक्टोरियल. ओके, सो इसके वजह से ये फंक्शन क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन. ओके, so whenever you have a function and inside the function somewhere if you're calling the same function again, then that is called as a recursive function. Okay, so ye ho gaya, right. So there are two things that I've done here. For recursive function to work, there are actually three things required. First is you have to call the function from within the function. Okay, so मतलब जो function है उसके अंदर वही function को फिर से call करो.
दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप कॉल करोगे सेकेंड टाइम, तो अगर आपने x के साथ ही कॉल कर दिया तो क्या होगा, मतलब x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x, फिर से x, तो क्या हो जाएगा, मतलब मैंने फैक्टोरियल ऑफ 5 बोला. ठीक है, सो मतलब आगे जाके मैं इसको कॉल करूंगा फैक्टोरियल ऑफ 5. सो ये पहला स्टेप में क्या होगा, ये फैक्टोरियल 5, तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5. ठीक है, तो ये फैक्टोरियल फिर से 5 फैक्टोरियल 5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये फिर से 5 इंटू फैक्टोरियल 5, फिर से कॉल होगा 5, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो ये तो भाई अटक जाएगा, राइट मतलब 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसा हो जाएगा, राइट. So that is not what we want. So the second requirement is whenever you call the factorial second time, you have to reduce the number. Okay, either reduce or increase, whatever. Okay, मतलब नंबर थोड़ा चेंज होना चाहिए, नहीं तो ये फंस जाएगा. ओके, सो ये हो गया नंबर चेंज. ओके, ये भी ठीक है, अभी भी ठीक है, ठीक है, बट देर इज स्टिल अ प्रॉब्लम. If I run this right now, it will still create a big issue. Okay, so let us see what that issue is. So let's take an जीरो आएगा ना आंसर से. huh? सर आंसर जीरो आएगा ना सर. हाँ, answer 0 आएगा. Let me show you why. Okay, so let's say I call factorial of 5. Okay, so what will be the first statement? So first statement will be 5 into factorial of 5. Okay, so पहले इसमें ये आ जाएगा, ठीक है. अभी सॉरी factorial of 4 because x minus 1 है, राइट. सो ये ठीक है. अब ये वापस फैक्टोरियल फंक्शन पे जाएगा, तो ये क्या होगा 4. सो ये रिप्लेस हो जाएगा अब नए फंक्शन के अंदर 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, राइट. ये भी ठीक है. अब इसके अंदर ये फिर से कॉल होगा, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ये भी ठीक है. अब इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब ये कंटिन्यूसली रिकर्सिव होते जा रहा है, ठीक है. ये और अंदर जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे बंद होना चाहिए, बट क्योंकि आपने कोई स्टॉप कंडीशन नहीं रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, राइट. फिर ये और आगे जाएगा 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ -1. सो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है. सो द थर्ड स्टेप फॉर कंप्लीटिंग योर रिकर्सिव फंक्शन इज, so before you call it, here you have to put a stop condition. Okay, so if you do not put the stop condition, ये lifetime चलते रहेगा, right. So let's do a stop condition. So if x is, let's say क्या करें, x is equal to 1, ठीक है. अगर x is equal to 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है. सो आई कैन डू रिटर्न 1. okay, return 1 or return x, anything. okay, so greater than नहीं, sorry, less than equal to. अगर x 1 से नीचे चले जाता है या इक्वल हो जाता है, आई एम गोइंग टू रिटर्न 1. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस स्टेटमेंट, इंस्टेड आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस. ओके, सो दैट इज इट. सो ये हो गया मेरा ये. सो नाउ आई जस्ट हैव टू कॉल, सो लेट्स से prod is equal to factorial of, let's say 5. okay, so if I run this, I get 120. okay, so that is how you can write a recursive function. okay, so ये मैंने function लिखा, ये मैंने call किया, ठीक है. so I hope this part is clear. yeah, so we finished recursive function. okay, so let's move ahead to the last part of this chapter, that is modules. okay, so this is the most important part in this particular, I would not say most, but it is very important. okay, so this is the reason why you can write big codes in Python without getting messed up. okay,
So now what really happens when you start writing programs? Okay, so uh, when you write programs for the lab, okay, so you're writing just a single file, okay, that is fine. But that is not the reason why we are learning programming. We are learning programming so that in future we can build something. Okay, so maybe you are learning programming to be a freelancer. Okay, so maybe you are learning programming to get a job somewhere, right, in a big company or something like that, right? But anywhere you go, you are going to work on projects. Okay, and when you work on big projects, the main problem with working on bigger projects is the amount of code that you write. Okay, so let's say for example, in my case, if I show you the code of CMSIS, okay, so the college management system, you will see at that time it was created around 8 years back. Okay, so it is an 8-year old software, and I'm still trying to upgrade to a newer version. But 8 year back, I never used to. I did not have the knowledge of modules as such. Okay, so the problem there was my entire code is in a single file. Okay, so you can imagine, so there are around 10,000 functions or something like that for every purpose. So if there are so many, sorry, 10,000 lines of codes are there, and around 1,000 to something like that functions are there. Okay, so you can imagine if something goes wrong somewhere. Okay, so let's say a student, some teacher says this thing is not working, so I have to search that 10,000 lines of code to find out where exactly the problem is. Okay, so that creates a big problem for me right now. So what in the next version I'm trying to do is I'm trying to separate out the contents in separate modules. Okay, so what do you mean by that? So let's say for example, now the way you separate out the thing, it is completely based on the developer. Okay, so for example, let's suppose in case of CMSIS, so what I would have done, if I would have known 8 years back this particular part, then what I would have done is all the student related tasks I will keep it in students module. Okay, all teachers related tasks on teachers module, all admin related tasks on admin module, all HOD related tasks HOD module. Okay, so like this if I do, and if some particular person, let's say an HOD says this particular feature is not working, I don't have to go to any other file except the HOD's file. Okay, so that is why modularization of your code is very important for bigger projects. Okay, so that's why today in this particular part of this particular chapter, we are going to see how to create your own modules and packages. Okay, so let's begin. So let's come over here. So this is my simple file, right? So now you have seen that if I want to use the functions and uh, variables of the math library, I use import, right? So import math, right? And then I can do, let's say, print math dot pi, that prints the value of pi. Then I can also do print math dot square root of, let's say, 4. Okay, so I can do both these things, and if I run, I get 3.14 and 2.0, right? So basically what this is a module, right? So this is the math module that you have seen. Okay, so this is inbuilt. Now today we are going to see how to create your own module. Okay, so you can create any module you like. Okay, so what is a module? Module is nothing but you create a file with some functions, and that is your module. That's it. Okay, so let me show you. So let's create another file. So let's come to this particular folder. Okay, so this is my main2.py. Let's in the same folder. So I am in the Python folder. Just right click, new Python file. Okay, so let's say you can give any name. It is up to you. What should I give?
Okay, so I'm giving the name additional. Okay, so additional.py. So this is my file additional.py. Now here I'm going to define certain variables. Let's say name Shiburaj, and let's say I also define a function greet, or else I don't want any parameter as such. So I will just say hello. Okay. So what I've done is I have created a simple file, a Python file, nothing special. I've created a file and I have set a variable and a function. Okay. बस एक्चुअली आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जो चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है. And now this is your module. Okay. Now the best part about Python is every file is a module. Okay, so every file is a module. So now the only thing is how to get this module into your code. Okay, so this is your main code and this is your uh, extra functions or the module. Okay, so I want to get this module additional.py inside your code. So what is the process? Okay, the process is very simple. You just write import. Okay, you write import and the name of the module. Okay, so name of the module is additional. That's it. And all the code from there is now accessible inside your program. Okay, but the only thing is if you want to access it, you cannot access it like this. Okay, so if I say print name, okay, so this will not work. Okay, so like this if you do, and if you think that this name will be printed, no, it doesn't work like that. Okay, so the way it works is you have to do additional dot name. Okay, so like in case of math library, you must have seen I did import math, and then whatever function I want to get from math, I used to do math dot square root, math dot pi. The same way here also, after importing, so while importing, one thing to note is I did not put dot py. Okay, so this is not required. So the extension is not required, only the name is required. Okay, additional, import additional, then inside that additional dot name. Okay, and that's it. If I try to run this, I get Shiburaj. Okay, so from here the variable name is coming over here. Okay, if I want to run, let's say, let's do print and do additional dot greet. Okay, so I can run the function also. If I run, it says hello. Okay, actually I did not wanted print. Okay, so I can do this directly because this itself is doing print, right? So दोबारा print करने का कोई मतलब ही नहीं है. So I'm just running this function and I should get a hello, right? So I'm getting the name as well as the hello. Okay, so this is how modules work. Okay, okay, I will now explain it along with an example so that you understand it better. Okay, so let's take the last example. So let's write a program for factorial. Okay, so let's write a equal to 5 and let's write for I in range क्या था 1 to a plus 1, right? And what I had to be, so prod is equal to, I can directly do this, I, and I have to initialize prod with 1. Okay, and I can do print prod. Okay, so this is a simple program to find the factorial of a number. Okay, so let's, instead of putting it putting here hard coding the value, I will do int input and let's say enter number. Okay, तो ये थोड़ा सा बेटर लगेगा और इधर भी सिर्फ रिजल्ट नहीं डालते हैं,
इसके साथ थोड़ा और शो शाइन करते हैं. So factorial is करके यहाँ पे PROD. Okay, so format. Let's see how does this work. Okay, so let's run. Enter number 5, press enter. The factorial is 120. Perfect. Okay, so ये हो गया मेरा program. Now what I want to do is I want to modularize this code. Okay, so I want to uh, modularize the entire this program. Okay, so now how to modularize this? Okay, so you could put everything inside what do you say, inside a additional file, but that doesn't make any sense. Okay, so what we normally do is we try to create a function out of it, and then we use that uh, to put it inside additional module. Okay, so let me show you how that is done. First, let us create a function for this, for finding out the factorial. Okay, so instead of doing it like this, I would do remove this, and I'm just going to, let's define factorial of, let's say, x, and here I'm going to paste the code. Okay, so that code was there, that was there before, that I'm putting it over here. So I'm putting product equal to 1. Okay, then I am doing a range, and now instead of a I have to use x. Okay, because x is what I am passing, right? So x, and then I'm multiplying, and after everything is multiplied, I'm going to return prod. That's it. So this is my function. Perfect. Okay, now I want to call this function. So to call it, I will say let's call it answer is equal to factorial of, let's say, a. Okay, and here I'm going to say answer. Okay, so what I've done is I've just rewritten the code. मैंने लॉजिक चेंज नहीं किया है, सिर्फ कोड को थोड़ा रीराइट किया है ताकि फंक्शन के अंदर आ जाए. ठीक है, now let's run this. Let's say 5, and exact same output. Okay, now once you have done this, now you can convert this into a module. Okay, so let's see how to convert this into a module. Okay, so module के लिए normally हम लोग module किस चीज का बनाते हैं? कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्लास, ये सब चीज का हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं. ठीक है, हम लोग ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये इनपुट स्टेटमेंट, ये सब का मॉड्यूल नहीं बनाते. ठीक है, हम लोग किसका मॉड्यूल बनाते हैं? फंक्शन, वेरिएबल्स और क्लासेस. क्लासेस अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो ये सब चीजों का हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे. ठीक है, सो यू कैन सी नाउ आई हैव अ फंक्शन ओवर हियर. सो आई विल कट दिस फंक्शन फ्रॉम हियर, पुट इट इनसाइड दिस. That's it. My module is ready. Okay, so module is nothing but any variable, any function, any class, anything, you put it in a separate file and that becomes a module. Okay, that's it. So ये हो गया मेरा module, but अभी मैं इसको अगर run करूंगा तो मुझे error देगा. Okay, so let's see. If I do, you can see the factorial function is not defined. Why? Because वो तो मैंने निकाल दिया यहाँ से, right? So अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मॉड्यूल को लाना पड़ेगा अंदर इस प्रोग्राम में. So I will do import, and the name of the module is the name of the file. Okay, so name of the file is additional. Okay, so one module can have hundreds of functions. Okay, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन रहेगा, इसके अंदर हजारों फंक्शन हो सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, right? So I am just importing all the functions. Okay, so when I do this, I am importing everything. Okay, so जितने भी functions है उसके अंदर सारे के सारे import कर रहा हूं मैं. And now to call this, still it will not work. Okay, so still if I run this, it will still say not found. Why? Because now to access this factorial function which is inside this module, I have to add this in front of this. Okay, so additional dot factorial. Okay, मतलब additional के अंदर का function कॉल कर रहा हूं मैं, मतलब additional के अंदर एक function है factorial, उसको कॉल कर रहा हूं, right? So that is what this particular statement means. Okay, so is it clear?
Yes, sir. Okay, so this is about function modules. Okay, now this is one way of doing this, one way of importing your modules. Okay, I will show you one more way of importing the modules. Now you can decide which one you like. Okay, the second way I'm showing you now. So the second way is using the from keyword. Okay, so from, and here you will write the name of the module. So additional. So from additional, then you write import, and here you write what do you want to import. Okay, so you want to import this function factorial. Okay, okay. Now you may ask what is the difference between this and what is the difference between this. Okay, so ये दोनों import करते हैं, ठीक है, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. ओके, फर्क क्या है देखो, व्हेन यू डू इंपोर्ट एडिशनल यू आर इंपोर्टिंग एवरीथिंग. ओके, जितने भी एडिशनल के अंदर फंक्शंस डिफाइंड है, वेरिएबल्स डिफाइंड है, जो भी है सब कुछ आप इंपोर्ट कर लेते हो. बट अगर आपको एक्सेस करना है तो यू हैव टू ऐड दिस. ठीक है, विदाउट दिस इट विल नॉट वर्क. ओके, सो इफ यू आर यूजिंग इंपोर्ट you have to do this. But if you're doing this, okay, so let me comment this first line. Okay, first import मैंने comment कर दिया. So if you're doing the second method, then there is a slight advantage. Advantage is now you are saying from additional module only import factorial और कुछ नहीं, only import factorial function. Okay, अब इसका फायदा ये है कि अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है. अब फैक्टोरियल एक इनबिल्ट फंक्शन हो गया, मतलब ये फाइल का ही फंक्शन बन गया. ठीक है, मतलब इट इज एज गुड एज यू आर डिफाइंड दिस फंक्शन इनसाइड दिस मेन. ओके, सो ये फ्रॉम यूज करने का ये फायदा है. समझ में आया? सो इंपोर्ट करने से क्या होता है, द मेन द टेक्निकल डिफरेंस, व्हेन आई से द टेक्निकल डिफरेंस from the point of view of a programmer, when you do this statement import additional, आपका कोई भी फंक्शन रहेगा तो it will all be imported, and it will, you to access it you will have to use the name of the module dot whatever you want. Okay, but if you do it like this, then the advantage is that the name of the function will be directly available for you to execute. Okay, so you can see I can directly run this. I don't need to do additional dot factorial, ये करने की जरूरत ही नहीं है. Okay, so if I run this now, if I do 5, you can see I can directly get the output. Okay, good. तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया. ठीक है, now let me add one more function over here, or let's add a variable. Let's say pi is equal to 3.14. Okay, so I have added a variable called pi is equal to 3.14. Okay, so I have one function in the module and I have one variable in the module. Let's see if I can access the variable now. So I have done this, right? So can I access the variable? So can I do print pi? Can I do this? No, sir. No. That is where, that is the main difference between this and this. Okay, so in this particular step you are specifically saying that I don't want everything, I only want factorial. Okay, that means आपने इधर 1000 फंक्शन डाले हैं तो भी सिर्फ जो फंक्शन आप बोलोगे उतना ही इंपोर्ट करेगा. ठीक है, अगर आपको पाई भी चाहिए तो कॉमा डालो और पाई डाल दो यहाँ पे. ठीक है, मतलब कॉमा डाल डाल के आप जितने चाहिए उतने इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी imported, right? So now if I run this, let's say, you can see I get 3.14. Okay, so like this you can do. Or if you do the first method, अगर आप फर्स्ट मेथड ट्राई करोगे तब तो आपको पता है कैसे एक्सेस करना है. ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड का एडवांटेज ये है कि एक ही कमांड से आपको सब कुछ इंपोर्ट हो जाता है, बट एक्सेस करने के लिए आपको डॉट डालना पड़ेगा. ठीक है, and let's run this again
and perfect. Okay, so that works. Okay, so is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now one last thing before we go to libraries or packages is, let's go back to this method, and let me remove this and this. So now this is working. Okay, so now just imagine your module has 100 functions. Okay, आपके मॉड्यूल में 100 functions है. तो अगर आपको ये मेथड से इंपोर्ट करना है, तो आपको कॉमा डाल के कॉमा डाल के कॉमा डाल के, सॉरी, कितने बार करोगे ऐसा, है कि नहीं? आपको समझो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 ऐसा करके कितनी बार यहाँ पे टाइप करोगे, राइट? सो इज देयर अ शॉर्टकट? यस, देयर इज अ शॉर्टकट. यू कैन डू स्टार. Okay, so from additional import star, when you do this, everything from the what do you say, module is imported into your main file. Okay, so आपको हर एक का नाम specifically देने की जरूरत नहीं है. Okay, but should you do this? No, never. Okay, never do this. Why? Can anybody tell me why I should never do this? सो Yes. सो अगर मॉड्यूल में प्रिंट फंक्शन कोई रहेगा तो वो भी प्रिंट Yes, होगा. yes, yes. Perfect. Very good. This is what I was looking for. Okay. So problem क्या है? क्योंकि मॉड्यूल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि आपने ही बनाया हो. ठीक है, हो सकता है आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया हो, राइट? हो सकता है उसके अंदर किसी ने गलती से फंक्शन का नाम प्रिंट दे दिया या सम दे दिया या कुछ और इनबिल्ट नाम दे दिया. बट व्हेन यू डू दिस star, it is importing everything and it will replace the original definition, and जो नया definition है वो आ जाएगा. Okay, this is very risky for your project. Okay, so when you do something like this, unless you have not created the module, never do this. Okay, अगर आपने खुद ने किया है तब भी बहुत रिस्की है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी मिस्टेक हो सकता है. बट अगर किसी थर्ड पार्टी का है तब तो ये नेवर, you should never do this. Okay, जो आपको चाहिए वो आप मैन्युअली इंपोर्ट करो, or else do this simple. Okay, I always do this. थोड़ा सा लंबा पड़ता है, मतलब हमेशा मुझे ये करना पड़ता है, बट एटलीस्ट वो किसी के साथ कोलाइड नहीं करता. Okay, because when I do the second method, it is actually replacing. See, the problem with the second method क्या है पता है? सेकेंड मेथड में प्रॉब्लम ये है कि समझो कि यहाँ पे एक फंक्शन था. ओके, लेट्स से ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन था, लेट्स से t. Okay, so this is my function. Okay, and here I am importing everything, right? I don't know, I am importing some third party library. Okay, so आपके हिसाब से ये जब मैं फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करूंगा तो ये वाला रन होगा कि ये वाला रन होगा? आपको क्या लगता है? दिस वन, इंपोर्ट वाला, ये वाला, ये वाला कि मॉड्यूल इंपोर्ट वाला? का लग रहा, मॉड्यूल वाला. मॉड्यूल. Okay, so the way this works is it will always run the one which is coming after. Okay, it doesn't matter whether, उससे कुछ लेना देना नहीं है कि मॉड्यूल का रहेगा कि ये रहेगा. Okay, it is what matters is which one is coming later. Okay, so अभी इसके अंदर देखो, पहले मैंने इंपोर्ट किया और फिर मैंने फंक्शन डेफिनेशन किया. Okay, so that means what, this will be replaced. Okay, so basically ये आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद वही फंक्शन को आपने रिप्लेस कर दिया. ओके, अगर ये मैंने, अगर लेट्स रन दिस एंड सी, सो इफ आई रन दिस, लेट्स पुट 5 एंड यू सी आई गेट 5. ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 ही रिटर्न कर दिया, राइट? दैट मीन्स दिस फंक्शन इज रनिंग. ओके, अभी सिंपल मैं एक छोटा सा ट्रिक करता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ.
ठीक है. Import can be anywhere. Okay, it is not required कि वो first line ही होना चाहिए, but as a standard सारे developers import first line ही रखते हैं. Okay, so that should be what we should also follow. Okay, but ऐसा कोई mandatory नहीं है कि आप import नीचे नहीं ले सकते. Okay, so let's suppose मैंने नीचे लिया. Now let's run this and let's put 5. Can you see difference? So now it doesn't matter what you have written over here. बाद में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है. सो ये वाला फंक्शन रन हुआ, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल रन हो गया. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो विच वन टेक्स, so whatever comes later will replace the original one. Okay, so yeah, so that is about modules. So I hope this is fine. So never use this. This is just to tell you that ये option है. जब भी आपको modules को import करना है, या तो ये method use करो, या तो अगर ये use कर रहे हो तो यहाँ पे specifically बोलो क्या चाहिए आपको. ठीक है. Okay, so I think that is done. So that is all about modules. Okay. Go to the last part. So last part is even more important, is the packages. Okay, so the part is how to create your own packages. Okay, so okay, so now what are packages? Now there are modules, there are packages. Okay, so modules are nothing but a simple Python file with some code. That's it. That is a module. Okay, so usually in a module we will put some functions or some variables or some classes. Okay, so that is what we will normally have in a module. Now modules तो सब ठीक है, but when you work on really big projects, modules भी आपको help नहीं करेगा. Okay, like for example, in let's say I took an example of engineering. Okay, so let's suppose आप engineering की पढ़ाई कर रहे हो, right? 4 साल की पढ़ाई है, right? So you must be learning from various books, right? So you have books of sem 1, you have books of sem 2, and inside sem 1 also you have multiple subjects, right? So now if I tell you give me the book, give me your notebook of let's say BW. Okay, so I'm asking you, give me the notebook of BW. Okay, so there are two ways of doing this. One way is for all the 4 years you are going to create one notebook. ठीक है, 10,000 पेज का एक नोटबुक ले लिया आपने और सब कुछ आप उसी में लिख रहे हो पूरे 4 साल. That is one option. Okay, now obviously you can understand the problem in this, right? So in future अगर मैं आपको बोलूं BW का notes दिखाओ तो आप तो पागल ही हो जाओगे, right? So that way what you will do is, चलो ठीक है, उससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, 8 अलग बुक्स बनाता हूँ. सेम 1 का एक बुक, सेम 2 का एक बुक, सेम 3 का एक बुक, सेम 4, सेम 5, सेम 6, सेम 7, सेम 8 का एक बुक. ओके, सो 8 बुक बन गए. So now it is little better. So if I say BW, so you just have to find out, अच्छा BW first sem. Okay, so first sem का बुक खोलोगे, उसमें से निकालोगे. ठीक है, तो this is about modules. Okay, तो आपने modules बना दिया. ठीक है, बट इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि एक सेमेस्टर में इतने सारे सब्जेक्ट्स है भाई, तो उसमें भी अगर आपने एक बुक 6 सब्जेक्ट के लिए यूज किया तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि हर एक बुक में चैप्टर्स भी होते हैं. तो आप सोच सकते हो कि आपका एक बुक जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स है कितना बड़ा हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई यू विल से नो, मैं क्या करूंगा, मैं एक एक सब्जेक्ट का बुक बनाऊंगा एंड उसको सेमेस्टर वाइज कैटेगराइज करूंगा, राइट? सो दैट इज वेयर पैकेजेस कम्स इनटू पिक्चर. ओके, सो पैकेजेस का फंडा यही है कि मॉड्यूल्स को और अरेंज करो. ओके, सो बेसिकली
what is a package? Package कुछ भी special नहीं है. Take a module, put it inside a folder, that is called as a package. Simple. Okay. So कोई भी एक module ले लो, उसको एक folder के अंदर डाल दो, then that will be called as a package. Okay. So let's create a package for our engineering notes. Okay. So to create a package, you have to do two things. Okay. So two very important things. First, हाँ, ये एक और चीज मैं बताने भूल गया, मॉड्यूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पैकेजेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आपका मेन फाइल है, मतलब मेन फाइल main2.py, मतलब जो जिधर आपको इंपोर्ट करना है उसी फाइल के लोकेशन में ही आपका मॉड्यूल या पैकेज होना चाहिए. ओके, इफ इट इज नॉट इन द सेम डायरेक्टरी इट विल नॉट वर्क. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैंने मेन यहाँ पे रखा है और डेस्कटॉप में जाके मैंने फोल्डर बनाया तो नहीं चलेगा. ओके, सो इट हैज टू बी इन द सेम लोकेशन. ओके, सो ये मेरा फोल्डर है पाइथन का जिसके अंदर मेरा main2.py है, उसी के अंदर मैं और एक डायरेक्टरी बनाता हूँ. सो आई विल गो टू न्यू and you can see in PyCharm I have an option for creating a directory. Click on that and let's call it notes. Okay, so my package name is notes. First step is create a folder. Okay, so I have created a folder. Inside that, right now, just by creating a folder, it will not become a package. Okay, so to package बनाने के लिए दो step है. पहला, create a folder. Second is the important step by which any folder will become a package. Just right click, go to new. So inside that folder, you have to create a Python file. Okay, you have to create a Python file with a very specific name. Okay, so the name is $init_.py. Okay, so मैं इसको जरा नोटपैड में लिखता हूं ताकि आपको दिखे. So $init_.py. ओके, तो अगर ये फाइल कोई भी फोल्डर में रहेगा देन दैट फोल्डर इज कॉल्ड अ पैकेज. ओके, सिंपल, एकदम सिंपल है पैकेज बनाना पाइथन में. कोई भी एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ये फाइल डाल दो, अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, खाली फाइल, बस उसका नाम ये होना चाहिए. ओके, सो init.py, that's it. Okay, let's create that file, press enter. You can see now I have init.py inside notes, and that's it. I have created my module, created my package. Okay, now inside this package, now I can right click and create any number of modules I want. Okay, so inside package you will have modules. Okay, so let's put modules, let's say books.py. ओके, सो मैंने books.py करके एक मॉड्यूल बनाया. ठीक है, जो है नोट्स के अंदर. ओके, सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन. सो sem1 okay, let's create another function sem2 books. Okay, so you get the idea, right? So you can create any number of functions. ये सिर्फ dummy functions है. ठीक है, तो ये मेरा बन गया मॉड्यूल. Okay, so you can see now I have created a package called notes और उसके अंदर एक मॉड्यूल है books. Okay, a file is called a module whereas the folder is called a package. Okay, अब ये folder package तभी बोलेंगे जब ये फाइल रहेगा तो, अगर ये फाइल नहीं है तो वो पैकेज नहीं है. Okay, so now this is done. Okay, so now let us see, let's remove everything and let us see how to import a package. Okay, so to import a package, the logic is you have to use the second method. Okay, so second method कौन सा था? From. Okay, so from, अभी कौन सा है package? Notes. Okay, so you can do import
कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है? आपको इंपोर्ट करना है बुक्स, ठीक है। सो फ्रॉम नोट्स मतलब फ्रॉम द पैकेज इंपोर्ट बुक्स, ओके। ये हो गया। अब नाउ इट इज वेरी सिंपल, यू कैन डू बुक्स डॉट sem1, जिससे sem1 का फंक्शंस कॉल होंगे। देन यू कैन डू sem2, then you can do sem3, ठीक है। So you can see I can organize this, okay। So if I run this, I get sem1, sem2, sem3 books, okay। So this is how you can import a package from from a folder, okay। So ये हो गया मेरा एक मेथड इंपोर्टिंग का, ओके। सो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ कि आपको हर एक के आगे बुक्स डालना पड़ता है, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। देयर इज अनदर वे जिसके अंदर थोड़ा और इजी करना है, अगर आपको तो कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू नोट्स डॉट बुक्स and here you can specifically mention what you want, okay। So what you want is sem1। so अभी इसका एडवांटेज ये है कि अभी आपको बुक्स डॉट करने की जरूरत नहीं। so you can simply write sem1 and it will work, you can see sem1 books, right। अगर आपको sem2 भी चाहिए तो आप कॉमा डालो, sem2 डाल दो। so now you can call sem2। similarly if you want sem3, sem3, okay। so that is how you can do packages, okay। so any doubts, any queries? okay, now can you do sub packages? मतलब पैकेज तो बना दिया, अब सब पैकेजेस कर सकते हो क्या? व्हाट डू यू थिंक, सब फिर पैकेजेस वही कर? फाइल में वही वही डायरेक्टरी के अंदर करना पड़ेगा क्या नोट्स? हाँ, सब पैकेजेस है तो वही डायरेक्टरी के अंदर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इनसाइड नोट्स, आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर, लेट्स क्रिएट a folder, okay। so I will show you another method of doing the same thing। now you can see I have an option for creating directory, but PyCharm के अंदर एक beautiful feature है, it is called Python package, okay। so ये Python package ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ वो फोल्डर में init.py बना देता है, उतना ही डिफरेंस है। so आपका थोड़ा सा काम बच जाता है, okay। so let's try that। so let's make Python package and let's say sem1, okay। so I am giving the name sem1 for Python package। so let's run। so you can see उसने एक फोल्डर बनाया और init.py भी डाल दिया उसके अंदर, okay। so that is the beauty of PyCharm, okay। so PyCharm is specifically meant for working with what do you say, Python, right। so that's why there are lots of features which are helpful, for easier writing of code, okay। so let's write another, make another package, sub package। so let's write sem2, ठीक है। तो उसने फिर से एक फोल्डर बनाया, अंदर init.py डाल दिया, तो ये अभी क्या हो गया, सब पैकेज हो गया, ओके। नोट्स इज द मेन पैकेज, उसके अंदर sem1 इज द सब पैकेज, ओके। now similarly I can make another, okay। so let's do this now manually, okay। so let's create a directory, let's call it sem3, okay। so you can see जब सिर्फ मैं डायरेक्टरी बनाता हूं तो init.py नहीं बना, okay। so that we have to now do it manually। so underscore underscore init underscore underscore dot py, okay। so ये अगर आपको टाइम बचाना है तो create a python package, okay। ओके, सो ये हो गया मेरा 3 सब पैकेजेस, ओके। सो ऑब्वियसली मैं इसके अंदर और सब पैकेज बना सकता हूँ, अगर अगर आपको वैसा करना है तो यू कैन एक्चुअली राइट क्लिक एंड यू कैन क्रिएट bw देन cp देन ऐसा करके अलग अलग पैकेजेस के अंदर भी सब पैकेज बना सकते हो, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू सच डिटेल, ओके।
सिर्फ लॉजिक इतना ही है, जितना भी आप पैकेजेस बनाओगे उसके अंदर init.py होना चाहिए, दैट्स इट. ओके, नाउ लेट्स राइट क्लिक एंड क्रिएट अ मॉड्यूल, लेट्स से पाइथन फाइल, एंड क्या मॉड्यूल बनाए, सेम वन में bw होता है ना, सो bw.py. ओके, सो ये हो गया अपना मॉड्यूल. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट how this entire thing will work. Okay, so let's see how to import it. Right now, before that, before importing, let's write something, right? Because without any function inside a module, import करके करोगे क्या, है कि नहीं? So let's say author. ठीक है, so मैंने ये function से bw का author print होगा, right? So let's print bw author. कौन है bw का author? रविश. Ravish. Okay, so let's print Ravish. Let's come back and let's see how to import this package. Okay, so we have created a module called bw inside sem1 package, which is inside nodes. Okay, so let's see how to import it. So for importing from, now what is the main package? Nodes. Sub package क्या है? sem1. So sub package जब करोगे तो dot डालना पड़ेगा. So dot sem1. ठीक है, अब जब आप मॉड्यूल पे जाओगे, ओके, सो यहाँ पे हो गया पैकेज, ये हो गया सब पैकेज, अब मॉड्यूल की बारी है. ओके, सो जब मॉड्यूल पे जाओगे सो दो ऑप्शन है, या तो आप डॉट मार के यहाँ पे ही मॉड्यूल लिख दो, ओके, bw मॉड्यूल, राइट, एंड देन यू डू इंपोर्ट एंड यू कैन से ऑथर, राइट. दिस मेथड, दिस ऑप्शन इज देयर, और यू कैन डू this option where you are importing entire module. Okay, so this first one, let me write a comment. Okay, so the first one is entire module import, and second one is only author function is imported. Okay, so this is the difference between this import and this import. Okay, तो ये दोनों मेथड भी ठीक है. अगर आप ये मेथड यूज करते हो और अगर आपको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? अगर आपको ऑथर फंक्शन रन करना है तो कैसे करोगे, अगर पहले मेथड से करना है तो? bee.author करना पड़ेगा अगर मुझे पहले मेथड से करना है तो. बट अगर मेरे को सेकेंड मेथड से करना है तो बी जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑथर. ओके, सो यू कैन सी जब मैं ऑथर करता हूँ डायरेक्ट तो ये वाला हाईलाइट होता है, और जब मैं बी डॉट ऑथर करता हूँ ये वाला हाईलाइट हो रहा है. ओके, ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. एनी डाउट्स? सर विजुअल कोड में कैसे करेंगे? विजुअल कोड में भी सेम ही है. इफ आई जस्ट ओपन दिस एंड लेट्स ओपन, है क्या पाइथन, किधर गया? Okay, so this is my folder. So same way I can just create a folder, let's say test. Okay, so test बन गया, उसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा __init__dot_py. ये बन गया मेरा पैकेज. ओके, अब ये पैकेज के अंदर अगर आपको सब पैकेज बनाना है तो जस्ट सेलेक्ट अगेन क्रिएट अ फोल्डर, लेट्स से dummy, right? Now this is just a folder, this is not a package. Okay, now in Visual Studio Code this is the feature that I like the most. Okay, तो अपने को Visual Studio Code में राइट क्लिक करके न्यू फाइल करने की जरूरत नहीं है. You can directly do this. Okay, so you can click over here and you can say __init__dot_py.
ओके, एंड ये आपका बन गया सब पैकेज। ओके, सो टेस्ट आपका पैकेज है, डमी आपका सब पैकेज है, और इसके अंदर एक मॉड्यूल बना लेते हैं। सो लेट्स कॉल इट useless.py. okay, and let's call it def not important, print. ओके, सो प्रिंट हेलो। तो ये हो गया मेरा पैकेज। ओके, सो मेरा पैकेज देखो कैसा है, टेस्ट मेरा पैकेज है, उसके अंदर डमी मेरा सब पैकेज है, उसके अंदर मेरा एक मॉड्यूल है यूजलेस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, सॉरी इंपोर्ट इट। सो टू इंपोर्ट इट, कोई मुझे बताओ कैसे इंपोर्ट करेंगे, अगर किसी को समझा है तो बताएगा कोई ना कोई, बताओ कैसे करें। from test फ्रॉम dot टेस्ट dummy डॉट डमी, import useless डमी, उसके बाद import useless import useless, that's it. And now to call useless dot not important, that's it. Okay, so if I run this I get, अरे स्पेलिंग मिस्टेक किया क्या मैंने, ठीक है, एनीवे, सो आ गया अपना आउटपुट।